This is now the challenge. The challenge is how do we counter it? Do we counter it by simply opposing Mr. Modi? क्योंकि ये हो रहा है कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है कि मतलब मिस्टर मोदी को रिप्लेस करना है, बीजेपी को रिप्लेस करना है। पर अगर आप देखें कि मिस्टर मोदी इज नॉट ए पर्सन, ही इज ए फिनोमेना, और उसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स तो कांग्रेस को नहीं। You cannot challenge Mr. Modi's authoritarianism with a dynasty, which is what the Congress wants to do. You cannot challenge Mr. Modi's attack on diversity with vote bank politics of the kind that Congress practices. क्योंकि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म क्या है? ये तो माइनॉरिटीज को हॉस्टेज रखने की स्ट्रेटजी, कि उनको लटका के रखो कि दंगा हो जाएगा, तुम्हारे को सिक्योरिटी देंगे नहीं तो दंगा हो जाएगा। Don't ask for anything, don't ask for water, don't ask for electricity, not for education, not for health. You are only about security, I will give you security. This is a politics of keeping hostage. You cannot do that. And development, you cannot counter this corporate style development of Mr. Modi by focusing only on schemes like Manrega and others. You have to come up with an alternative. So, to my mind, the challenge that all of us face is a challenge of strengthening the idea of India. We have to create a new movement. If I can link it with what I said earlier, शुरू में मैंने क्रांति के विचार, रेवोल्यूशन पे कहा, बाद में मैंने इंडिया के विचार पे कहा। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं, तो आज हमारी चैलेंज क्या है? हमारी चैलेंज है कि वी हैव टू क्रिएट ए न्यू रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विच वुड स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ इंडिया। हाउ डू वी स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ इंडिया? बाय imagining democracy, imagining and strengthening democracy at the grassroots level, by decentralization, by a new model of democracy where decisions are not taking place at the top. Formation of Telangana should not mean that instead of the whole of Andhra Pradesh decisions being taken in Hyderabad, now only decisions of half of that area are being taken in Hyderabad. It must mean that decisions are now being taken in the villages, at the district level. Unless there is a real devolution of power, merely making Telangana is not going to solve our problem. So the first challenge we have as a movement is to come up with a new model of democracy. And I submit that model of democracy can come only if we believe in devolution of power. Decentralization of power, radical decentralization of power. Most of the decisions which are being taken in Hyderabad should be taken in Mehboob-Nagar. Decisions that are taken in Mehboob-Nagar by the collector should be taken in the Gram Panchayats. Unless we have substantial devolution of power, merely making Telangana is not enough. Second, we have to come up with a new model of secularism which would respect diversities. Why? Because opposition to Mr. Modi cannot come by Congress-style secularism. It has to be a different model of secularism. It must be a model of secularism that does not use minorities as a vote bank, which attends to their real life issues. What are the real life issues of minorities? The real life issue is education, employment, discrimination, and also in some cases security. But no one is talking about education and employment and housing, education, employment, housing. These are the real issues that minority face. That is not being talked about. You talk only about security. So we have to focus on the real life issues of minorities. And we have to come up with a language that resonates with ordinary people's vocabulary. That's the second challenge. And the third challenge is
to come up with a model of development which is different, which is alternative. The model of development that we started with, which is called the Nehruvian model, that model does not work. We cannot repeat European model of development in India and hope to succeed. ये पूरा इतिहास का सबक है हम सबके कि उस मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं. हिस्टोरिकली वी डोंट हैव दोस कंडीशंस. द यूरोपियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कुड बी प्रैक्टिस्ड इफ देयर वाज एक्सेस कैपिटल. और वो उनके पास कैपिटल कहाँ से आई थी? Colonialism. They could extract so much of resources from other countries to build their industrial revolution, to build their big empires. European capitalism is propelled by external resources. We don't have those external resources. उस कैपिटल के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते. तो हमें अपने देश के लिए अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनाना. वो मॉडल जो कि हमारे गांव को बेहतर बना सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, हमारी कंडीशंस में काम कर सके, हमारी टेक्नोलॉजी सुटेबल हमें दे सके. दैट टू मी इज द चैलेंज. सो वी हैव 3 challenges today. Challenge of reinventing democracy, challenge of recreating secularism, and challenge of thinking of an alternative model of development. Unless we do this, mere political opposition to Modi or BJP is not going to lead to the kind of changes that we imagined or that we wanted. These are the 2 broad segments that I wanted to talk about. I will just take your permission to talk for next 5-10 minutes about the farmer's condition, and then I'll end and we can have a discussion. Probably these have stretched a little longer, but just about the I wanted to focus on the farmer's condition because that is the biggest political question in our country today. हमारे देश में किसान का सवाल है, वो इस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल है. पहले जमानों में हम लैंड क्वेश्चन की बात किया करते हैं. At that time, 30-40 years ago, land question meant relationship between rich landlord and poor peasant and landless worker and so on. That is not the important question today. आज देश में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है farmer as a entire category being dispossessed of income and property. आप सब लोग एकेडमिक्स भी हैं, समझते भी हैं इस सवाल को. अगर आप सरकारी आंकड़े देखिए इसको, just look up the NSSO round 70th, उसका डेटा पिछली बार आया है. कल जो अखबार में आंकड़े छपे हैं सोशल इकोनॉमिक सर्वे वाले, उससे दरअसल वो ज़्यादा रिसेंट है. सोशल इकोनॉमिक सर्वे वाज एक्चुअली कैरिड आउट इन 2011, लेकिन उसके फिगर्स रिपोर्ट अब हुए हैं, कल परसों रिपोर्ट. ये जो दूसरा मैं बता रहा हूँ NSSO, it was carried out in year 2012-13 and reported in 2014. What does that show? That survey shows, it's a survey of the condition of farmers in our country. Authentic survey like our NSSO, क्योंकि हमारे देश में अभी भी statistical records reasonably अच्छे. That survey shows that the average income of a farming family, monthly income, is rupees 6,300. Average monthly income of a farming family. That is not income from agriculture, because it includes all kinds of income they have, from agriculture, from
एनिमल हस्बेंड्री, फ्रॉम डूइंग लेबर, फ्रॉम पेटी बिजनेस, सब कुछ शामिल करके सैलरी सब मिला, इफ यू लुक एट average monthly income of a farming family from cultivation, it is only 3080 rupees. 3080 is the monthly income of farmers from cultivation agriculture. This is official information and this is average. We are not speaking of the poor. इस एवरेज में पंजाब का फार्मर भी शामिल है, वेस्टर्न यूपी भी शामिल है, आपके यहाँ डेल्टा के अंदर जो अच्छी फार्मिंग होती है वो भी सब शामिल है, आंध्र प्रदेश में जो होती है सब, which is to say a majority of farmers do much worse than this. If you do a simple comparison, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी जाएं तो हम ये चीज़ जरूर करें, हम किसी भी गांव में जाएं और किसान से पूछें कि आज से 40 साल पहले आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी और आप उस पैदावार से क्या खरीद सकते हैं। सिर्फ ये नहीं पूछें कि पैसे में कितनी इनकम, व्हाट कुड यू परचेज फ्रॉम व्हाट यू प्रोड्यूस्ड and what can you purchase today? The comparison is absolutely striking. Broadly speaking, the price of the farm in the last 40 years or so, the price of farm produce has gone up anywhere between 10 to 20 times. किसी फसल में 10 times बढ़ा है, किसी में 20 times तक बढ़ गया पिछले 40 साल। मगर किसान जो चीजें कंज्यूम करता है उनका प्राइस 50 to 100 टाइम्स बढ़ गया और दूसरे लोगों की इनकम, गांव में जो सैलरीड लोग हैं उनकी इनकम हैज गॉन अप मोर देन 100 टाइम्स. सो इफेक्टिवली परचेजिंग पावर ऑफ द फार्मर हैज गॉन डाउन by 5 to 10 times, while the purchasing power of salaried people has actually gone up by 1.5 or 2 times. Simple comparison. आप पूछिए कि गांव में टीचर को सैलरी क्या मिलती थी 1975 में, आज टीचर को क्या सैलरी मिलती है। फार्मर को 1975 में अपने फार्म प्रोड्यूस से, क्योंकि उसका साइज ऑफ होल्डिंग कम हो गया होगा इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ 1 क्विंटल गेहूं में 1 क्विंटल राइस में आप पहले क्या खरीद सकते थे, आज क्या खरीद सकते हो, इसका कंपैरिजन आप कर लीजिए. दैट इज व्हेन यू बिगिन टू सी द स्ट्राइकिंग डिफरेंस.